Good morning, dear student. Today onward, we will read our chapter number 5, Industries. You have prepared your chapter number 4 for your second unit test. Let us come start our chapter number 5, Industries. Firstly, we will read what is industry. As you know, dear students, in the ancient time, people completely depend on the agriculture. When the civilization comes from other countries in India, the more development will be happen in India. After a long after independence, there here in India technologies developed, and the foreigner make many types of industries. Here industries are those form where we take raw material for the other thing, for making the other things. Understand? Let us comes on the introduction. What are the industries? Manufacturing industries play an important role in modern time. As you know, dear student, manufacturing means where things manufacture. As you see by the wheat, there are many things manufactured as biscuit, as flour, that is called manufacturing industries. In modern time you can see there are manufacturing industries, and it is playing very important role in our life. They satisfy a number of man's growing need and provide employment to more and more people in the countries. By the manufacturing a number of growing needs, because as you know, in the ancient time people live simple life, but modern time people wants modern life, and their needs are too much, and manufacturing industries complete there. Because you want biscuit, you don't want to eat simple chapati. Understand? Then you can understand that these industries fulfill our need completely and provide employment means रोजगार. वे हमें रोजगार भी देते हैं, because lots of our parents and lots of the people work in the industries. Understand? Manufacturing has been changed fast with the rise of human technological achievement. It has therefore become very complex at present compared to what is it was 100 years back. As you know, in this time manufacturing industries changing very fast, because nowadays technologies are developed too much, and you can see um, industries make a thing, make lots of things from a raw material. Understand? You can take an example by the wheat. Industries make many things, but in the ancient time technologies are not developed as much this time. Second point is here, manufacturing now varies from making very simple household industries good like a teapot to a very complex modern goods like कंप्यूटर. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत इजी चीज़ों से लेकर बहुत हैवी चीज़ों तक बनाती हैं। इजी चीज़ें मतलब जैसे टी पॉट हो गई, पहले घरों में ही टी पॉट बनाए जाते थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ आज इंडस्ट्री हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही। उसमें टी पॉट हो गया, छोटी सी छोटी चीज़ों में कंप्यूटर्स। Third point is here, manufacturing involves processing of good, as most of the material available in the nature or produced by man cannot be used directly. Manufacturing industries उन चीज़ों को बनाती हैं जो प्रकृति में तो ऑलरेडी पाए जाते हैं, लेकिन इंसान उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हैं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल कॉटन मस्ट बी गिन स्पन एंड वूवन हैज़ ह्यूमन यूज़. As you know, dear students, when cotton was raw as a raw material, people don't use, then industry make useful to it. Mineral oil must be refined to the bring it to into successful uses. As you see, जो mineral oil होता है वो people के लिए बहुत useful है, लेकिन
इंडस्ट्रीज उसको रिफाइन करती हैं. दे नीड टू रिफाइन because mineral oil, as pure mineral oil, is harmful to the person, then industry refine it. Therefore the processes by which the natural products are made convenient to the humans are called manufacturing. जैसा कि जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो नेचर में पाए जाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इंसानों के लिए यूज़फुल बनाती हैं. एंड द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग आर ब्रॉडली कवर्ड बाय द टर्म इंडस्ट्रीज. और जो भी चीज़ें इनके द्वारा बनाई जाती हैं वो इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, as we already discussed, what are the manufacturing industries? Manufacturing industries are those industries where people convert raw material as other thing. The conversion of raw material into finished product with the help of machinery is called manufacturing. जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्सन क्या करता है, एक रॉ मटेरियल को एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है, किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ हैवी मशीनरी विच इज operated with power when raw materials proceed into finished good and the which human effort and skill have been put into. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हैवी मशीन्स यूज़ की जाती हैं और उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है और उसमें ह्यूमन की हेल्प से, बिकॉज ह्यूमन ही उसे ऑपरेट करेगा. The modern manufacturing industry involve the use of the variety of raw material, large amount of power, large on capital, skillful laborers and automatic electronic controls for the equipment. जो रॉ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं. रॉ मटेरियल चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी मनी भी चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, स्किलफुल लेबर्स भी चाहिए एंड automatic electronic controls for the equipment. What is the next point is here, point number 2, need for industries in the world. What is the need? क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि in the ancient time people just use agriculture to their livelihood and life of the people is very simple. There are very few industries in the ancient time, but what is the need of the industries? Because dear students, population of every country is increasing day by day. If we work by the our hand, it will be not developed, and the civilization make the industries more popular, because when the foreigner comes here, they developed here lots of industries. It is proven fact that the country with strong industrial sector has shown higher economic growth. As you know, अगर जिस कंट्री में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है. इम्प्रूव नेशनल इनकम एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे ज़्यादा लोगों का लाइफ भी हाई फाई होगी. Therefore, industrialization has played an important role in improving the economic condition of various countries like ऐसे ही अमेरिका, जैसा कि आपको पता है जो अमेरिका एंड जापान है वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए उन्हें डेवलप्ड कंट्री भी कहा जाता है. इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री, इट इज़ नॉट डेवलप्ड कंट्री बिकॉज हियर द some major fact which are not completely fulfill their requirement to the developed country. Industries are yardstick of the country's economy. A country cannot survive of इट्स एग्रीकल्चर अलोन. जो एक कंट्री होती है वो सिर्फ, जैसा पहले होता था कि लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, आज के डेट में ऐसा नहीं है. एक देश सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं हो सकता है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द की ऑफ द फास्ट प्रोग्रेस.
एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो हमारी किसको दिखाता है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी फास्ट हो रही है, जैसा कि अमेरिका एंड जापान। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स एफिशिएंसी लाइक मिनरल्स एंड द पावर रिसोर्सेज। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अंडरस्टैंड, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज़ को, अगर आप कहीं पे सपोज एक इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हो, अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। अंडरस्टैंड, फर्स्ट इज जोग्राफिकल फैक्टर एंड सेकंड इज नॉन जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर मीन्स कि वहाँ पे कैसी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्या वहाँ का क्लाइमेट है, क्या वहाँ की लोकेशंस हैं, क्या वहाँ पे रोड्स हैं, etc दिस टाइप्स ऑफ कॉल्ड जोग्राफिकल कंडीशन। नॉन जोग्राफिकल कंडीशंस लाइक कितना हमारे पास पैसा है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारे पास हैं या नहीं हैं, बैंक वहाँ पे हैं। फर्स्ट we will read geographical factor. Which are the geographical factor? First is raw material. Raw materials means kacha padarth, raw materials. If you wants to take, you wants to make tea, suppose you wants to make tea, what is the need for the milk? You need for the milk, sugar, and so on, water. If you don't have water, suppose you don't have water, can you make the tea? You can't make the tea. Hence, if you wants to start a industry, you firstly, for the running the industry, you firstly need to raw material for establishment of these industry. Understand, suppose you wants to start a sugarcane business, sugarcane industry, and there is no sugarcane in the you have. Understand, if you want. Second is power supply, because you know that in the industries people use the machine, and for it is power supply, light is very compulsory. Water supply, water supply, because water is essential for the man, and if there is no water you can't start a industry. Transport, understand what is the use of transport in industry, how the transport affect, because if you wants to start a industry in the, suppose here there is no road, you will, you can't start a industry, because you see the latest example of it, why the people don't come on the hills place, because here is no transport facility. अगर आपको एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ के लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी नेसेसरी, अगर आपको वहाँ पे सामान पहुँचाना है, आपको वहाँ पे जाना है वहाँ, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट होना भी ज़रूरी। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने हाथ से ही सामान ले जा रहे हैं ऊपर को, और इससे आपको क्या पड़ेगा, महंगा होगा। The survey of market and the demand. Next point is which factor affect survey of the market and demand. If you want to start a business industry, there should be need of this, there should be demand of this. You never grow any type of things which is not in demand. Understand, suppose you start a business of coffee in the plains area, because there are too hot always, and there is no use of coffee. You think that your business will be start continue well, it don't continue well. Demand. Next is labor. Labor is the very important factor which affect the industries, because if you don't have labor, you can't run the your industry. Climate affects the how the climate affect, because here if there is too hot and you wants to start a business of cold things, you can't start. Understand, dear student.
Non-geographical factor are those factor which are not depend on the geographical conditions. Suppose what is the location here, what is the transport here, what is the demand. First, capital means paisa. What you have, if you don't have the money, you can't start the business. Hope you understand, dear student. Thank you.